So this is the session 9. I, I want to take that session on Saturday, but students were saying that we want to study on the weekend. So in this session, there will be only one topic, that is the serviceability checks. And you perform these serviceability checks after design of your structural members, beams, columns, and slab all of these, right? So the serviceability, there are mainly 3 types of the serviceability checks for the RC buildings. The first one is the deflections, cracks in members, and vibration of the slabs. But normally deflections checks are performed in design practice, daily routine practice. Cracking effect has been taken into account using the effective moment of inertia in the new elastic design. And the vibration checks are normally performed for the flat plate, flat slabs, and for the slab beam system with span length is more than 50 feet, right? So the deflection checks will be performed in this course because these vibration of the slabs is not applicable because we do not have any span greater than 50 feet. And we have also incorporated the cracks in the members using effective moment of inertia. So now we are only left with the deflections, so we will perform these checks. So deflection, there are 2 types checks. One is the short-term deflections and other are the long-term deflections. And the short-term deflections are normally is for the due to the live loads, because for the dead loads is already incorporated during the construction when the formwork is being moved. It is also written in here that these limits are applicable only for the live loads because the members have already experienced the deflection due to the dead load self plus SDL after the removal of the formwork, right? So these limits has been defined by the ACI in table 24.2.2, and these are the maximum permissible calculation deflection, right? And these are done only for the purpose of the non-structural elements to be not to be damaged during the its design life, right? So there are some conditions, and the first condition is the one that the structural members are not supporting the attached or non-structural elements likely to be damaged by the large deflection. And there are the flats and roofs. And this is the immediate deflection, means the short-term deflection due to the maximum. LR means the roof, S means snow, and R means rain, and the limit is L by 180. The next one is the immediate deflection due to live loads, and it is L by 360 for the floors. The next is the same for the roofs and the floors. If the structural element is supporting or attached to the structural members, and further it is divided into 2, it's likely to be damaged by the large deflections or not likely to be damaged by the large deflection. And it consists of the short-term plus long-term deflections. Short-term deflections due to live load and long-term deflections due to creep and shrinkage. And these limits are L by 480 and L by 240, right? So these are the maximum permissible deflections. And in our case, if we take both the limitation L by 180 and L by 360, so for length 20, because we have maximum length of 20 feet of the beam and 15 feet, the permissible limits, the allowable limits of deflection is 1.33 inches for 20 feet for L by 380, 180, and L by 360 is 0.67 inches. And for the 15 feet, it is 1 inch and 0.5 inches, right? So let us go to the ETAB and go to the display, deform shape, and select the live load only because these limitations are only for the live load. And click on apply. Right, so let us turn off this floors. These limitations are for the slabs as well as for the beams, because if the beam deflected, the automatically slab will deflect with it. So let us go to this point. This is 20 feet and go to its mid, and we will see the deflections.
deflection value, and it is saying that it in UZ it is minus 0.05 inches. Because it is in inches, you can see in the top the displacement live in inches. For the 20 feet at the mid it is 0.054, and here it is 0.02. So we will take 0.04. So we will go to the, so ETAB results is 0.054 inches. So if you compare it with the allowable limits, it is 1.33 inches and 0.67 inches. So it is way less than the allowable limits. So the non-structure elements attached to this beam or slab will not be damaged during its lifetime, right? So this is for the length 20 feet beam or slab, both are the same, right? So for the 15, so this is the 15 length beam, right? And this is the med. So you have to calculate the UZ mean in the direction, the gravity direction, and it is minus 0.372 inches, right? So these are the maximum. You can also go for the all stories, but this is 10 story is the same for all of the story, because we have more loads, 50 PSF live load and then 50 PSF dead load. So we will write it here. For the 15 we have 0.03. Let us make it 4 inches. So 0.04 inches the deflection caused by the live load, and the allowable limits for the serviceability requirement by the ACI is 0.5 inches if you are taking it as a floor, or if taking as a roof. For the floor it is L by 360, its limit is 0.5 inches and we are getting 0.4 inches. So this, there will be no short-term deflection. We can see more value than the specified by the ACI. So we are on the safe side. There will be no cracks to the non-structure elements during its lifetime. So this is how you calculate the short-term deflection and compare it with the allowable limits of ACI. The next one is the long-term deflections, and it is a little bit tricky and hard to understand as compared to the short-term deflections. The long-term deflections are due to the time-dependent parameters, which is the creep and shrinkage, and all of you know what are these. And as per the ACI 318.14 section 24.2.4, long-term deflections can be calculated by multiplying the deflections due to sustained load and alpha delta factor. So if you calculate the deflection from the sustained load and multiply that deflection with this factor delta F, you will get the total long-term deflection due to creep and shrinkage. So this is the equation that you will get the total long-term deflection by multiplying the deflection due to sustained load multiplied with the factor alpha delta, right? And what is delta sustain? Delta sustain is equal to the delta due to the dead load plus delta to the 0.5, 50% of the live load, right? And what is alpha delta is equal to this factor mu plus divided by 1 plus 50 into rho. And what is rho? Rho is actually is equal to AS divided by BD. And this AS is actually the top reinforcement of the beam, right? Because these cracks will normally appear at the surface of the slab, and slab is attached to the beam. So the top of the beam is connected to the slab. That's why the top reinforcement of the beam is taken into account for the calculation of this long-term deflections, right? So this is the statement of the code, which we can do by itself, that we have these values of delta L and delta alpha delta and rho, and this is the value for the
phi. This is the phi value, and it depends upon the time. If you are calculating your long-term deflection for the 3 months, 6 months, 12 months, or 60 months or more, you have to select this factor value from the corresponding table, right? So let us do our long-term deflection checks. So these are the limitations, which is L by 480 or L by 240 if the non-structure elements are attached to the structure elements, and if you want it to be likely to be damaged by large deflection, the limit is L by 40. If you do not want that damage likely to be large deflections, it is L by 240. So we will do both the checks. And remember that in your design practice, if this value becomes a little bit more, for example, if the limit is 0.5 and you are getting a value of 0.7 inches, so it does not mean that your beam or slab will crack or fail. It means that the non-structure elements like walls or windows, cracks will appear in these non-structure elements, right? So in our case, for length 20 feet of the beam, we have this limitation 0.5 inches, and for the L by 240 it is 1 inches. For 15 L by 480 its limit is 0.35 inches, and for the L by 240 its limit is 0.75 inches, right? So let us calculate this delta sustain, and then we will select this value and all of these, right? So let us go to the ETAB. So for a delta sustain, you have to go to the design combination, and I have already defined this sustain loads, and you have to select dead as one factor, STL as 1, and live as 0.5, because this is the definition of the sustain load. And you have to run the analysis, and then you have to display the deformed shape for this load combination sustain load, right? And displacement is Z, and click on apply, right? So now the deformation has been shown for this combination. This is sustain loads, and for the 20 feet, you have to go at the mid because we have more load in here. So you have to select that displacement value, and we have this UZ as minus 0.31 inches for 20 feet. This is the ETAB results for, so the delta sustain is equal to 0.31 inches, and the value for the 15 feet this is not this one is 50, it is 0.24. You can see 0.24 and 0.2. So 0.24 inches. This is delta sustain value for our beams. Now, the next one is that you have to find alpha delta, the factor that you have to multiply with this delta sustain to calculate the total long-term deflections. So for alpha delta, you need two another factors, that is this one, that time dependent, and another is the reinforcement dependent, right? So let us select, if you want to calculate it for the 12 months, it is 1.4. So we will doing it for all. So we will take is 1.4. And the next one is the reinforcement ratio that we have designed our beam. So let us go to the beam. So this is our beam. We have used 4 number 6 bars in our top of the beam. So what we will do, we will do this P rho will be equal to this area top bar, it is 4
number 6 bar, and it is come out to be 4 into 4 point. It is 1.76 inch square. So it is 1.7 inch square divided by, this is BD, right? B in here we have 12 and D we have 21.75. So let us do that and multiply these two. So let us multiply these. Multiplication, right? So let us perform this calculation. So we have 1.76 divided by 12 into 21.75. That is 0.006, right? And we have this value 1 plus 50 into P dash, right? This is actually rho. You can also call it as a P, whatever. So we will be doing this 1 plus 50 into this P rho. So it is 1.33, right? So the value is 1.33 and this value is 1.4. So we will be doing 1.4, this value, this psi value divided by 1.3, which we get from this denominator 1 plus 50. So if you do that, 1.4 divided by 1.3, so it is 1.07. It means that you have to increase the delta sustain 7%. So you will get the long-term deflections for your system, right? So this value is come out to be 1.07, right? So if you multiply this, example, this is our delta. This is our delta long term. It will be equal to 1.07 into the sustained delta, which we get from the ETAB, which will be equal to 0.31. And that will give me the value of 0.31 into 1.07. So its deflection has been increased 7%. So it is come out to be 0.332. So now its value is 0.332 inches. Right. So now you have to compare this. This is the final deflection, long-term deflection for your 20 feet long beam. And you have to compare this with the allowable limit, right? So the deflection in your ETAB model is 0.332 inches and the allowable is 0.5 inches if you want your structure likely to be damaged by large deflections, and if you do not want to be damaged by large deflections, it is 1 inches. So it is way less than 0.5. So we are on the safe side for the 12 inch or 20 feet beam. Now the next is the 15 feet long beam, that the sustained delta sustain obtained from ETAB is 0.24 inches. So now if we select it is for the 1 year, for the 12 months, it is 1.4, again 1.4, and the P is same because we are using same reinforcement. So it will be again it is I think 0.006. So if we
you multiply it with the 50 like we did, multiply with 50 plus 1, it will give you 1.33. So again, this way, this factor divided by 1.3, which we get from 1 plus 50 into rho dash, so it is 1.33. We have taken it in 3, so we will take it 3. Again, it is 1.07. It means we have to increase 7% of this value, right? So let us do that. So we will get this delta. This delta, that is, we have the limit 0.24. So we will be getting 1.07 into 0.2124. So it is 0.25. Let us make it 0.26. So its deflection is 0.26 inches. And you have to compare this with the allowable. The allowable is 0.375 inches for this condition that is likely to be damaged by large deflection. This normally does not happen. What is normally doing in our design practice, we take this value not likely to be damaged by large deflections, L by 240. So if you want to check all of this, you can check. That's why I have done all of these. So the limit is 0.375 and we have 0.27, 0.26, and this limit is 0.27. So all of the check has been passed. So there is no need to increase depth of the beam or reinforcement of the beam. If this limits increase, so this means this factors depends upon the long-term deflection, depend upon the area. The area of the steel, top steel, is directly proportional to this. So if you have increased this value, so the deflection will be less, right? So that's why when you are doing your design of the beam, if ETAB is giving you 3 number 6 bar, you have to provide, you can provide 4 number 6 bar, keeping in you the maximum reinforcement ratio. So if you provide 1 extra bar, it will help you in serviceability checks. So there will be no issue for you to check these limitations. So this was the whole story about the serviceability checks. So if you have any questions, you can ask. जी अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर जो ये हम शेरवाल प्रोवाइड करते हैं ड्रिप कंट्रोल करने के लिए, तो इसको अगर सर अगर लेट सपोज हमारे पास लोअर स्टोरेज तक हम शेरवाल प्रोवाइड करें और हमारे पास ड्रिप कंट्रोल होती है, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं है कि हम अपर स्टोरेज में भी प्रोवाइड करें? नहीं जी, ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है ड्रिफ्ट पूरी हो रही है लोअर स्टोरेज में, तो आप लोअर स्टोरेज तक ले सकते, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो करंट मॉडल है सर, मैंने 4 शेरवाल दिए 3rd स्टोरी तक सर, तो हमारे पास कंडीशन सारी पूरी हो रही है। हाँ, वो आप कर सकते हैं। वो तो मैंने आप लोगों पे छोड़ा, इसलिए तो मैंने वो कंप्लीट नहीं किया था। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें कि अगर आप वो पूरा लेकर जाए तो क्या होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नीचे तक पूरी हो रही है, तो अगर आप कर ले तो आपके पास इकोनॉमिकल बन जाएगा। ठीक है जी। लेकिन नॉर्मली जो अगर आप आर्किटेक्ट आपको अलाउ नहीं करता कि आप डिफरेंट ज़्यादा रेशियर वॉल्स प्रोवाइड कर ले या 1-2 कर ले, तो फिर आप वो मजबूरन टॉप तक लेकर जाएंगे। ठीक है ठीक है सर। लेकिन वो जो था सर, हम उसको जब टॉप तक भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर भी वो जो रेशो हमारे पास आ रही है 2% तक जो अलाउेबल है, तो उसमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो नहीं करता कि उस वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाए। जी जी बिल्कुल, वो आप देखेंगे ना, जो आप एक्सेल शीट में एंटर कर रहे, तो आपके पास जो रेशो 2 से ज्यादा हो रही है, तो आपने देखा कि हमारे पास सेकंड स्टोरी और थर्ड स्टोरी में ड्रिफ्ट के इशू आ रहे थे। तो अगर आप शेरवाल उस तक लेकर जाए, आगे ना लेकर जाए, तो कोई मसला नहीं।
यस, ठीक ठीक। है। सर और ये कॉलम डिजाइन में हमने देखा था सर के नीचे स्टोरीज में हमारे पास शेयर इन्फोर्समेंट की कोई डिमांड नहीं थी ना। जी जी मतलब शेयर रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं थी, तो हम जो टॉप स्टोरी में तो हमारे पास बहुत कम स्पेसिंग आ रही है, तकरीबन 4.5 हमने दिया था ना हाँ जी, सर। तो नीचे हम फिर मिनिमम रिइंफोर्समेंट देंगे या वही सेम 4.5 नीचे तक भी देंगे? वही आप 4.5 जारी रखें, क्योंकि आपने मेरे ख्याल में ये जिन स्टूडेंट्स ने एमएससी के कोर्सेज पढ़े या पीएचडी के कोर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, बीम कॉलम जॉइंट की रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर आप ये ठीक। जब इतना 4.5 प्रोवाइड करें तो आपके पास वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाता है कि आपके पास बीम कॉलम जॉइंट में आपके पास इतनी रेनफोर्समेंट हो जाती है। इसमें आपके पास लेपिंग की भी ओके, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप ये प्रोवाइड करें तो लेपिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती ठीक है सर, थैंक। सर मेरा क्वेश्चन सेशन नंबर 4 में लोकल एक्सिस के बारे में है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप में भी आपको मैसेज किया था, है। जी जी, काइंड वो जरा समझा दे कि उसका फिनोमिना किस तरह है। देखिए जी, मुझे तो जितना याद है आपने क्वेश्चन किया था कि लोकल एक्सिस में लोड्स किस तरह रहते हैं, तो लोकल एक्सिस आपके पास हर एक मेंबर्स की अपनी एक लोकल एक्सिस होती है, ठीक है जी। लेट सपोज लेट मी शो दी वॉल्स। आप रिटेनिंग वॉल्स की बात करें, वहाँ पे कंफ्यूजन था ना। यस सर, एग्जैक्टली। देखिए जी, आपके पास ये लेट मी गो टू दी बेसमेंट। ये आपके ये आपके पास वॉल्स है, तो आप जब इस पे लोड्स लगाएंगे तो आप अपने जो एक्सिस है उसको आप डिफाइन करेंगे, राइट। ये आपके पास इसकी लोकल एक्सिस हम देख लेते हैं, इसकी लोकल एक्सिस कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि लोकल 3 एक्सिस इज द ब्लू वन। ये ब्लू वन आपके पास लोकल 3 एक्सिस है। तो आप जब लोड लगाएंगे तो लोड जो आपके पास सॉइल प्रेशर आप लगाएंगे तो आप बाहर से लगाएंगे। तो आप जब लोकल 3 एक्सिस सेलेक्ट करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि अप्लाई द लोड एट द लोकल 3 एक्सिस इन द लोकल 3 एक्सिस डायरेक्शन। तो आप जब लोड अप्लाई करेंगे तो वो बाहर से अप्लाई करेगा, तो इट विल बी लाइक द सॉइल प्रेशर। लेकिन आप जब फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल डिजाइन कर रहे तो वहां से आपके पास फ्रॉम द इनसाइड प्रेशर आपके पास लग रहा है। तो इन दैट केस यू हैव टू रिवर्स द लोकल एक्सिस डायरेक्शन। फिर आप सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि पानी जो है वो इनसाइड ऑफ दिस पूल है और वो अंदर से वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, तो आप इस लोकल एक्सिस को उस साइड पे करेंगे। तो इस वजह से हमने लोकल 3 एक्सिस सेलेक्ट किया। अगर आप ग्लोबल एक्सिस सेलेक्ट करेंगे तो ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस आपके पास डिफरेंट है फॉर द डिफरेंट वॉल्स। तो सारे वॉल्स का आप देख सकते हैं कि लोकल 3 एक्सिस इनसाइड पे है। तो अगर आप सारों को सेलेक्ट कर ले और एक ही साथ लोड लगा ले तो आपके पास बाहर से लोड लग जाएगा सॉइल प्रेशर का। ठीक है, ये बात क्लियर है। गॉट इट सर, थैंक यू सर। सर जो हमने अभी आज के लेक्चर में जो डिस्कस किया वो है टार्जन एनफोर्समेंट एंड बीम। सर कॉलम में पर भी हम जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, जो टार्जन एनफोर्समेंट है? बीम कॉलम में टॉर्शन कहाँ से आ गया? सर जो जैसा कि मैंने जो है ना एक बंदे से सुना है कि जो हम बीम डिजाइन करते हैं तो हम ऐसी तरह से डिजाइन करते हैं कि वो जो इसका जो टार्जन है वो बीम का वो कॉलम को दे दे। अच्छा, तो हमने किया है ना, हमने बीम का जो टॉर्शन है वो 0 कर दिया है, ठीक है जी। ये तो स्टार्ट में मैंने किया था लेकिन मैंने आप लोगों को शो नहीं किया था, ठीक है। हमने जो स्टार्ट में कॉलम की डिज़ाइन किए थे उस डिज़ाइन में ही मैंने जो बीम्स की जो टॉर्शन जो अवेलेबिलिटी है, जो कंसिड्रेशन है, वो मैंने 0 की थी। तो जितने भी टॉर्शन की वजह से स्ट्रेसेस आ रही है वो सारे कॉलम ले लेते हैं, तो कॉलम आपको उसके लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट की सूरत में आपको वो आपसे रिक्वायर्ड मांग लेता है कि आप इतनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दे, तो मैं पास हो जाऊंगा।
ठीक है सर, दूसरी जो है ना शेयर वॉल डिजाइन की जो है ना सर, ये है कि अगर टॉप स्टोरी पे जो है ना शेयर वॉल की रिइंफोर्समेंट ज्यादा आ रही है, अगर लोअर स्टोरी पे कम आ रही है, तो हमने टॉप से वाली जो है ना नीचे से टॉप तक एक ही रिइंफोर्समेंट देनी है, या जो है ना डिजाइन के हिसाब से जो है ना हम स्पेसिंग रख दे इसका? जी theoretically आइडियली स्पीकिंग आपके पास जो रेनफोर्समेंट शेयर शेयर वॉल्स में आएगी वो आपके पास बॉटम में ज्यादा आएगी, टॉप में कम आएगी। सर अगर जैसा कि कुछ जो है ना मॉडल्स में जैसा कि हम डिजाइन करते हैं, तो उसमें जो है ना टॉप जो अपर स्टूडियो इस पर जो है ना कॉलम में ज्यादा रेनफोर्समेंट आते हैं। वो आपके अगर पास उस एक केस ऐसा में केस आएगा, बन जाता शेयर है वॉल्स में आएगा तब आपके पास फॉर एग्जांपल रिटेनिंग वॉल है, जो जैसे आपके पास रिटेनिंग वॉल खत्म होगी आपके पास जो लिफ्ट वॉल है, शेयर वॉल्स है, वो आपको ज्यादा रेनफोर्समेंट मांगेगा उससे। तो उसमें आप नीचे से ही प्रोवाइड करेंगे ना, आप जो फील्ड में जो इंजीनियर्स है, जो कंस्ट्रक्शन उसको भी आसान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 12 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें नीचे 6 स्टोरीज में रेनफोर्समेंट कम आ रही है और ऊपर 6 में ज्यादा रही है, तो फिर आप उसी तरह प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्क बहुत ज्यादा है तो फिर आप उसी तरह प्रोवाइड करेंगे जो आपके पास ईटेब आपको दे रहा है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल 6 स्टोरीज में नंबर 4 बार यूज कर रहे हैं और टॉप में आपको नंबर 6 आपसे मांग रहा है, तो फिर आप नंबर 6 प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप फर्क बहुत कम है, स्पेसिंग में फर्क है या बार साइज सेम है, तो फिर आप थ्रू आउट सेम ही चलाए ताकि कंस्ट्रक्शन में आसानी हो। जी सर, अगर बॉटम स्टोरी में अगर हमारे साथ जो है ना वो 4 नंबर 6 इंच आ रहा है, 8 इंच आ रहा है, अगर अपर स्टोरी में 4 नंबर 6 इंच आ रहा है, तो इसी तरह कर ले, या एक ही जो है ना डिजाइन वो जो है ना दे दे हम? आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं ना। अगर आपके पास बॉटम स्टोरेज में नंबर 4 बार एट द रेट 6 आ रही है और टॉप में नंबर 4 बार एट द रेट 4 इंचेस आ रहे हैं, तो वाई टू यूज नंबर 6 बार, तो नंबर फोर 4 इंचेस पे प्रोवाइड कर दे। या अगर फिर भी डिमांड पूरा नहीं हो रहा तो नीचे नंबर 4 6 पे दे दे, ऊपर नंबर 6 6 पे दे दे, तो आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सर जो मिनिमम स्पेसिंग है स्टेप्स की, जैसे कि हम के साथ हमारे साथ जो है ना वो 4 इंच आ रहा है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, जैसे कि कंक्रीट का भी मसला ना हो? ये आप देखेंगे ना, ये एसीआई की रिक्वायरमेंट से आप देखेंगे कि आप बार डाया कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आप उसकी क्लियर स्पेसिंग मिनिमम आपके पास एसीआई आपको कहता है कि आप जो शेयर वॉल्स है उसमें मिनिमम क्लियर स्पेसिंग आप 3 इंच रखिए, 3 इंच से ज्यादा कम, 3 इंच से कम ना रखिए। और डिफरेंट लेयर्स में 2 इंच रखिए। ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, आप सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसीआई कोड में आप देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो वॉल्स है उसमें आप 3 इंच क्लियर स्पेसिंग अगर आप रखें तो कंक्रीटिंग में आसानी होगी, हनी कम्बिंग उसमें नहीं होगी ना। और सर बीम और कॉलम के लिए कितनी जो है ना वो यूज होते हैं बीम और कॉलम प्रैक्टिस में में? आपके पास जो पुराना कोड था उसमें 1 इंच था, और जो न्यू कोड है उसमें क्लियर स्पेसिंग मिनिमम 1.5 इंच है। नहीं सर, जो स्टेप्स का जो स्पेसिंग है सर, उसकी बात कर रहा हूँ। स्ट्रिप की स्पेसिंग मिनिमम स्पेसिंग, जी जी, जैसा कि हमने वो जो है ना अभी अगेन डिजाइन में मैंने आपको प्रोवाइड कहा किया कि है, आप जैसे कि बार डाया को देंगे। अगर आप नंबर 3 बार यूज करें तो 3 इंच सेंटर टू सेंटर से आप कम नहीं दे सकते। ठीक है सर। और सर जो हमने ये शेरवाल जो है बिल्डिंग में जो है ना वो प्रोवाइड किए, तो सर इसके जो है ना वो ये कितना परसेंट लोड लेगी, मतलब ये जो है ना ये तो शेरवाल ज्यादा हो गए, तो भाई ये डुअल सिस्टम होगा या डुअल एनवायरमेंट सिस्टम जो है ना वो ये यही होगा? नहीं, ये डुअल सिस्टम नहीं है, डुअल सिस्टम इज समथिंग एल्स। ठीक है जी, ये आपके पास ये जो शेयर वॉल्स है इसको आपने ड्रिफ्ट कंट्रोल के लिए यूज किया है, तो इट शुड टेक 100% लोड ऑफ द अर्थ। ओके ठीक सर, है तो जी, फिर कॉलम और नहीं लेंगे ये लोड जो है लेटर लोड है? कॉलम भी लेंगे ना, कॉलम भी लेंगे, शेयर वॉल्स भी लेंगे। आपने डिजाइन 100% अर्थक्वेक के लिए किया है क्योंकि आपने इस पे ड्रिफ्ट कंट्रोल करना है। अगर आप इस कम लोड पे डिवाइड करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो फिर आपके पास ये फेल हो जाएंगे ड्यूरिंग डिजाइन अर्थक्वेक। ये सर ये तो हो जाएंगे, लेकिन ये जो शिरवाल है ये अभी जो है ना लेटर जो लोड है वो रजिस्ट करेंगे कि नहीं? अगर करेंगे तो कितना करेंगे, मतलब कोड के हिसाब से जो 25% एटलीस्ट होना चाहिए देखिए जो 25% मोमेंट वो रजिस्टिंग का? चीज़ है आपके पास डुअल सिस्टम है। वी आर नॉट डिजाइन डुअल सिस्टम, डुअल सिस्टम इज समथिंग एल्स। डुअल सिस्टम में आप शेयर वॉल्स हर जगह पे हो, आपके पास हर जगह शेयर वॉल्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे भी शेयर वॉल्स होंगे एल शेप में, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी शेयर वॉल्स होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी, हर जगह पे शेयर वॉल्स होंगी। क्योंकि आप सारे जो लेटरल लोड्स है आप शेयर वॉल्स पे रजिस्ट करेंगे। आपकी जो ड्रिफ्ट आ रही है, आपकी जो डिमांड्स आ रही है, जो बेस शेयर है, वो सारे शेयर वॉल्स लेंगे। जो फ्रेम्स है वो आप सिर्फ ग्रेविटी के लिए आप डिजाइन करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे जो हमारा जो फ्रेम है उसको हमने
लेटरल प्लस ग्रेविटी दोनों के लिए डिजाइन किया है, लेकिन जो शेयर वॉल्स है उसको हमने सिर्फ जो सेल्फ वेट है और जो एडिशनल जो इस पे SDLR है उस पे इसके लिए करें, लेकिन मेन पर्पस इसका आपके पास जो ड्रिफ्ट कंट्रोल है, और ड्रिफ्ट आपके पास कहाँ से आ रही है, आपके पास अर्थक्वेक से आ रही है, तो आप 100% के लिए इसको कर रहे हैं। डुअल सिस्टम इज समथिंग एल्स। सर जो डुअल सिस्टम है उसकी जरूरत कब पड़ती है, मतलब वो आपके वो डिजाइन को देंगे, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को देंगे। अगर बस बिल्कुल इरेगुलर स्ट्रक्चर्स में फ्रेम स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा तो आप शेयर वॉल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। सर जो ये जो है शेयर वॉल डिजाइन में जो है ना बाउंड्री एलिमेंट चेक, सर इसका जो सी डेप्थ है और सी लिमिट है, अगर इसका जो है ना वो मतलब उसका लिमिट जो है ना वो क्रॉस हो गया तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, जो बाउंड्री एलिमेंट चेक है शेयर वॉल में। हाँ तो फिर बस आप डिजाइन सी ना, फिर आप अब शेयर वॉल खत्म कर दें, डिजाइन ना करें। ये अगर आपके पास ठीक है चेक सर। आ जाए, मैं मजाक कर रहा था, इसके आपके पास जब चेक कर ले बाउंड्री एलिमेंट रिक्वायर्ड है तो आपको बता दे कि कितना बाउंड्री एलिमेंट हमें चाहिए, तो आप वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वो लिमिट से क्रॉस हो रहा है, वो आपके पास फेल हो रहा है, तो फिर आप बाउंड्री एलिमेंट को साइज इंक्रीज करेंगे, या उसमें आप जो शेयर वॉल है लेफ्ट वॉल है उसकी आप जो थिकनेस है वो आप इंक्रीज करेंगे। फिर भी हो ना हुआ तो फिर आप FC प्राइम इंक्रीज करेंगे। आपने 4000 इस्तेमाल किया तो आप 6000 पे जाएंगे, 6000 पे काम नहीं करा तो आप 7000 पे जाएंगे। आप डिफरेंट ओके कॉम्बिनेशन ठीक है, थैंक फिर उसको पास करेंगे ना। ओके ठीक है, थैंक यू सर। इसके और भी सोल्यूशन है, फिर आप एक और शेयर वॉल कोर वॉल प्रोवाइड करेंगे, उसको फिर बीम से कनेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कपलिंग बीम। तो आप चाहते हैं कि इस पे जो डिमांड आ रहा है वो कपलिंग बीम के थ्रू उस शेयर से शेयर वॉल के साथ शेयर हो जाए, तो फिर आपके पास वो सिस्टम पास हो जाएगा। ये चीज आप सीखेंगे टाइम टू टाइम जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। सो द टाइम इज लेफ्ट लेस देन 1 minute, सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स। सर ये ETABS वाले सर फाइल अपलोड कर दे, और 14 स्टोरी बिल्डिंग वाला भी सर फाइल अपडेट कर दें, वो 4th सेशन तक सर अपडेटेड है। ठीक है, मैं अपडेट शेयर कर दूंगा। और so this is the end of this session. If you have any questions you can write it down with yourself and you can ask in tomorrow session, right?